Very good morning to everyone. Good morning, ma'am. Yes, sir, you can please continue. Okay. Uh, uh, Good morning, students. Myself, Kirtiraj Sijala, and I'm working as an assistant professor in information technology department, and I'm here to give you some information regarding IEEE. Okay, IEEE, that is in Institute of Electrical and Electronics Engineers, and with me, I'm having my team, Kripa Kundalia, who is working as a secretary in IEEE MEFGI student branch. Then Vice Chair Jaideep Modwalia, who is working as a student activity vice chair in IEEE MEFGI student branch, and Jai Budhdev, who is working as a student chair. So here, before I start, just let me give you some information regarding IEEE. IEEE is a world largest technical professional organization who is working for the benefits of humanity, where different researcher, student, community, or person came together for a mutual goal. Okay, so here we have a IEEE MEFGI student branch in a collaboration with IEEE, where we are working for students' benefit. We are organizing some workshop, technical workshop. We are organizing some webinars. We are organizing some practical based approach where student gets to expose with the interest of their technology. I can give you the example. Suppose IoT, Internet of Things, right? So we have a certain hardware related to IoT, and we are organizing some events where students gets to access this hardware in terms of their interest and exposed to the technology in a, you can say, before they come to final year. Okay, so as a IEEE MEFGI student branch, what we are doing here at MEFGI, what is IEEE, what kind of workshop we are organizing. If you are a member of IEEE, what benefits you should get, everything we will be discussing in this 10 to 15 minutes presentation. And at the last, you can interact with the students. Whatever the queries, you can post in a chat box and they will be happy to solve your queries. Okay, so I think over to you, Kripa. You can actually interact with the students and present what we are doing at the IEEE MEFJ student branch. Sure, sir. Thank you so much, sir. Hey everyone, I'm Kripa Kondalia from final year computer engineering, and we are here today to tell you about the student culture at Marwadi, the different clubs that are running at Marwadi, and mainly about the IEEE student branch of MEFGI. First of all, I'll give you a quick view about what is IEEE. IEEE is world's largest technical professional organization dedicated to advancing technologies. So, as Kirtiraj sir just mentioned, that it is a very huge organization where students and professionals are associated with that organization, and they conduct various conferences and workshops time to time. Next slide, please. A few facts about IEEE. Currently, it has more than 4,19,000 members enrolled to it in more than 160 countries. It's that huge. And it has more than 1,24,000 student members. Next slide, please. IEEE has 3,422 student branches at different colleges and universities in over 100 countries. And we are very fortunate to have one such branch at Marwadi, that is the MEFGI student branch. Next slide, please. So, talking about the MEFGI student branch, Jay Buddev is the student chair.
Jaideep is student vice chair, and I'm Kripa, who is the secretary. We are being mentored under Kirtiraj C. Jhala sir, who is the branch counselor of IEEE MEFGI student branch. So, guys, I would like to give you an insight that if you be the member of IEEE, you will have that tag of the membership, as well as you'll get to network and connect with intellectuals all around the world. So this will give you an idea about the current technologies that are going on in the world. This would help you whether you want to go for masters or you want to go for placements. It would advance both the careers simultaneously. Next slide, please. So the benefits of joining IEEE is it would definitely improve to your knowledge. As I just mentioned, you will have amazing networking opportunities, and you'll have your own community to get your projects with and get your project mentored under. Also, you can be the part of the professional groups where students are empowered to build their careers in their own interests. Next, please. uh, Keeping the technicality in current world, so it has many of the subscriptions, the digital library, the magazines, and all those things which you may get free when you get enrolled to IEEE. Next, please. Career resource and recognition. So, as it is well said, that leadership is a skill that must be crafted over time, and IEEE will provide you many opportunities to show your leadership skills and, in fact, sharpen it more. I would hand over to Jaideep, who is the vice chair, and he will tell you about what activities we have done at the IEEE student branch till now, as well as he will tell you a bit about what is the Google DSC Club and the AWS Club. So, thank you. Over to you, Jaideep. Okay, so yes, moving on to other benefits of IEEE, we have professional networking here. As Kripa already mentioned, you guys can create your own network with many of the companies, which can eventually help you guys to get placed at very good companies. Then we also have discount at many IEEE conferences. Then yeah, the member discounts. So as an IEEE members, we guys can enjoy discounts on like books, journals, and articles which are provided by IEEE, and also we can join conferences and proceedings at very low rates. And in addition, members can have access to variety of affinity programs that offer us with savings. Next slide. No, okay, then these are the membership grades that IEEE offers us. Like if you guys join, you have to join as student member. Then there are others like graduate student member, associate member, member, senior member, and fellow. Okay, next slide. So additional memberships like society memberships, where you guys can get a breakthrough to technical information in your technological fields, and also connect to worldwide technological experts in your respective fields. And young professional and women in engineering are the two branches which we have at MEFGA student branch. And other standard memberships also, which can help you connect to worldwide technological experts in your respective field. Okay, next slide. So yes, this is the award which we guys got last year for 2019 as a best student branch, and it was given to us in January 2020 at Sampark, which was held at Ganpat University. Let me tell you something about Sampark. Sampark is an event which is um, conceptualized by Gujarat section of IEEE, where student branches from all over Gujarat come together and share their experiences and what the events that they have done throughout the year. So with those events, we got IEEE's award for best student branch of 2019, and three of our volunteers also got the best student volunteer awards, as you will see in the next slide. So yes, these three guys got the best volunteer awards. The next slide.
And also, we held the most prestigious conference, IndyCon, which is conceptualized by IEEE India Council in the field of computer science and engineering, electrical engineering, and electronics engineering, which was held at our Marwad University in 2019, where various technological experts from all over the world came together and shared their experiences on their respective technical fields. Here you can see all these experts who came here. Next slide. These are snapshots of the same event. Okay, next. Yeah, it is same. And also we held one of the webinar in collaboration with the Developer Student Club at with IEEE, where Python was taught to students who were interested of fourth semester, where we taught them some basics of Python and programming in it, where they did some of it. In next slide, you'll see. Yeah, here is the screenshot of the same event. Next. And so yes, do join IEEE. It will be great for you guys to get exposed to it at this early stage. Next. And yes, not to forget, IEEE is offering us with a 50% discount on student membership, which is approximately $27. And with this promo code, you guys will get it at just $13. That is approximately 1,000 rupees. So do join IEEE. Thank you. Thank you, students. Now, if you have any query regarding this IEEE membership and its benefits, you can post in a chat box, and these three students are here to actually solve your queries. And again, here actually the main aim is to actually the main students' queries, irrespective of what we are teaching at academics, what we are doing right now. So we are actually organizing certain workshop webinars according to the student suggestions, and students came together and actually learned something new from its seniors and experts, right? So if you are really interested in learning something new, sharing the knowledge in technical aspects, then actually you can actually join IEEE. And here I think Jai, Kripa, and Jaideep has shared its email ID plus mobile number. So you can, if you are very much interested in detail conversation, then you can contact with mobile number, as well as you can contact with their email ID. Okay. So any queries, please post it in a chat box. These three students will interact with you guys. Yes, sir. I think Gaurav has asked that we participated in Indicon IEEE, so it will be similar. Okay, Gaurav. So, yeah, it is similar. The Indicon was the flagship event of IEEE, but then if you have attended it, you must have known that there were many of the members of IEEE who attended this conference. So, the benefit of being the member of IEEE is that you will get to attend these conferences at low cost. I think you must have paid something 3,000 for Indicon. And if you have been the member, the student member, you would have to pay very less. And for some events, you are just allowed to go for free. So that is the benefit of IEEE. That you are allowed to attend their events for free or for the low cost rather than the non-members. Same way, we are also organizing a workshop and webinars for IEEE members. Okay, so benefit for this also that you can share your knowledge with the other students, as well as you can connect with regarding workshop and webinars which we are organizing with the help of experts and with the help of students, right? You will get all the, I think, instruction related to, just go to the IEEE websites. If you are facing any difficulties related to join, then you can contact these three.
Yes, any query, please. Okay, so thank you, ma'am, for giving precious time of your lecture. And I think if you have, again, I was telling the students, if you are having any query, you can actually contact these three students. You can contact me as well. Waiting for you guys to join IEEE if you are really much interested in actually gaining the technical knowledge. I can give you the example. We are almost actually uh, for organizing the certain workshop related to cloud computing, Android, GitHub, or any other which you are interested. You can give the suggestion, and we are happy to actually organize the certain workshop. We'll be not organizing in between your academics. Don't worry. Uh, we'll be finding the certain times where you are free and you don't interrupt, or your academics didn't interrupt in between. So we'll be organizing in a such a way that you can join and you can give take the knowledge of certain technologies. Okay, so thank you, ma'am, for giving the time. Thank you. We are Thank leaving. you, sir. So guys, that was a introduction or the things regarding IEEE. There were some announcements. So whatever the queries, sure, Jaideep. So definitely, we wish you that we hope and we wish you will join IEEE and IEEE branch of our college, of our university, and you will get the maximum benefit of it. So now let's move to our things, that is operating system. We had discussed some brief about operating system, why we are using operating system, what is operating system actually is. So let's move ahead with that discussion. Okay, let me present you the screen first. So screen is visible to everyone. Yes, ma'am. Okay. So what we were discussing, that we were discussing about, we one of the thing that we had discussed already, that is the one point regarding the operating system, that is an interface between user and computer, right? So in brief, we had discussed that point, that there is an interface between a user and a computer, and without operating system we can also operate, we can also access the hardware of our system. For that we require the knowledge of machine language, right? So moving further with that, with this, we are having some another points regarding operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है, ये तो आप लोगों को पता चल ही गया है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने क्यों ऑप्ट किया? बस अपने, वी आर यूजिंग इट एज एन इंटरफेस बिकॉज वी वांट to work conveniently, to work efficiently in the system. That's why we are using operating system as an interface, right? अभी सिर्फ इतना नहीं है कि आपको machine language पे काम नहीं करना है, that's why you had opted. This is one of the reason we can say that. But we want to optimize our work. We want to work conveniently on the system. We want to work
efficiently on the systems. That's why we are using operating systems, right? So there are some definitions, you can say that, or you can say that there are some points regarding the operating system so that you can understand operating system in a better way. We are having a term that it manages hardware resources and provides various services to the user. Now, we had discussed one of the point regarding operating system. There are many more to discuss. The another point is it acts as a manager. जैसे क्या होता है किसी भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में भी बात करें, हमने क्या हमारे अगर मेरे ऑफिस की फॉर एग्जांपल फॉर एवरी ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन दे आर हैविंग डिफरेंट लोकेशंस. मान लेते हैं गूगल का जो ऑफिस है उसके डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है हर एक सिटी में. बहुत सारी सिटीज में बहुत सारे लोकेशंस पर गूगल के ऑफिस हैं. सो अभी क्या है, या तो गूगल का सीईओ सारे काम खुद करे, जाकर सब मैनेज करे, या फिर उसने क्या किया, द सेकंड ऑप्शन वी आर ऑप्टिंग इज वी आर हायरिंग अ मैनेजर टू मैनेज ऑल द थिंग्स इन दैट लोकेशन. हमने क्या किया, एक लोकेशन पे जिस ऑफिस में फॉर एग्जांपल इन Pune or in Mumbai, that office would be handled by this person. So I hire a manager that will handle all the things over here. So as a manager, what is the role? अगर हम एज अ मैनेजर किसी को हायर करते हैं, वो क्या करेगा, सारी चीजों को मैनेज करेगा. व्हाट इज द रोल ऑफ मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन? दे विल मेक द पॉलिसीज, दे विल मेक द थिंग्स, दे विल create or they will organize the meetings, right? So in this way the clashes would not be there. ठीक है, तो वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं, here we are talking about hardware and software both. If I am talking about the resources now, it means hardware resources and software resources. In hardware resources like RAM, CPU, hard disk, printer, scanner, these are your hardware resources. When we are talking about software resources, it is your files, semaphores, and many more that I will tell you in detail. So we are having multiple resources in our system. तो उन सबको मैनेज करने के लिए मुझे एक पर्सन चाहिए, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हियर. अभी देखो, अभी पॉइंट आता है कि क्या इस मैनेजर के बिना मैं काम नहीं कर सकती. जैसे कि फॉर एग्जांपल आई वांट टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी, राइट? मुझे एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है और मैंने क्या सोचा कि इतना काम कौन मैनेज करेगा. मैं क्या करती हूँ, मैं एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज को ये कॉन्ट्रैक्ट देती हूँ और मैं अपने मेरी जो पार्टी है वो ऑर्गेनाइज करके देंगी. तो जब भी आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो तो उसके लिए क्या करते हो, एक टीम बनाते हो. फॉर एग्जाम्पल आई एम ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट, उसके लिए मैंने क्या किया, आई एम हैविंग अ टीम ऑफ 10 पीपल, राइट? अभी हम अपने जो हमारा फेस्ट होता है उसी की बात करते हैं. वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज एनी इवेंट इन द एमयू फेस्ट and I am having persons as a coordinator, 10 persons in my team that will going to work. अभी देखो, इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास दैट आई हैव टू डू, लाइक डेकोरेशन फॉर द प्लेस और द लोकेशन आई हैड ऑप्टेड, registration entries, then announcements in the class, and many more, right? So what is the proper way to manage all these things? अब क्या management required है? Again we are using the word management. Why it is so? अब मैनेजमेंट क्यों रिक्वायर्ड है हमारे को यहाँ पर? अगर मैं ऐसा बोलूँ कि किसी भी कोऑर्डिनेटर को कि आप लोगों को जो करना है आपके हिसाब से आप कर लो, I'm not assigning any duty, so that if you are free to do whatever you want to in the event. तो अब मान लेते हैं कि सारे के सारे कोऑर्डिनेटर्स एक ही चीज कर रहे हैं, जैसे कि मान लो सबको डेकोरेशन करना है, सबको रजिस्ट्रेशन डेस्क पे बैठना है, तो अनाउंसमेंट कौन करेगा? अनाउंसमेंट तो रही गई. There is a clashes, there is nothing useful comes from that, right? That's why management is important, to assign a certain task to a person. ठीक है, जैसे कि हम क्लास की बात करते हैं तो क्लास में हम हर एक डिवीजन में क्या करते हैं, आप लोगों की क्लास में यू आर हैविंग सीआरs इन योर क्लास, right? Your class representative, that person who is managing, who is acting in an interface between a teacher and a student. अब टीचर को कुछ काम है तो वो आपके रिप्रेजेंटेटिव को, रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट लाइक कि ओनली द पर्सन जिसकी बात सुनी जाए, ही इज रिप्रेजेंटिंग, ही और शी इज रिप्रेजेंटिंग टू ऑल ऑफ यू 80 और 90 पीपल यू आर इन द क्लास, राइट? तो आपकी बात को रिप्रेजेंट करना उसका काम है और टीचर की बात को आपको रिप्रेजेंट करना उसका काम है. दिस इज व्हाट इट इज, एक्ट एज एन इंटरमीडिएटर, राइट? तो लाइकवाइज ऑपरेटिंग सिस्टम इन द कंप्यूटर सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारी मशीन्स में वही काम करते हैं. सारे रिसोर्सेज को मैनेज कौन करेगा? आपका
ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि अभी आप बोलो कि मैडम क्या जरूरत है मैनेजमेंट की, जिसको जो चाहिए वो चुपचाप ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी को प्रोसेसर यूज करना है, वो आके अपना वो यूज करे और चला जाए, किसी को रैम यूज करना है, वो आके यूज करे और चला जाए। व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाई वी आर हायरिंग अ पर्सन इन बिटवीन सो दैट इट विल मैनेज फॉर अदर्स? क्या हम लोग खुद से मैनेज नहीं कर सकते हैं? सो हियर द पॉइंट इज व्हेन मल्टीपल यूजर्स कम्स एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल 10 लोगों को सेम टाइम पे प्रिंटर चाहिए, ठीक है, 10 लोगों को सेम टाइम पे प्रिंटर चाहिए, तो क्या आप अब क्या करेंगे? सब क्या ऐसे पूछेंगे कि नहीं आप कर लो, नहीं पहले आप कर लो? एवरीबडी नीड्स इट राइट नाउ। नाउ टू whom आई वुड एलोकेट? अब कंप्यूटर सिस्टम को, मशीन को कैसे पता कि किसको एलोकेट करना है? देयर इज नथिंग टू डू ओवर देयर। तो क्या वहां पे क्लैशेस होंगे? होंगे क्लैशेस, right? So here the management is required. Now one person would be there who will manage the resources. उसको पता है कि कंप्यूटर सिस्टम में कितने रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज एलोकेटेड हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज फ्री हैं। फिर वो क्या करेगा? वो सबकी लिस्ट मेंटेन करके रखेगा, और जैसे ही जिस भी यूजर को जो रिसोर्सेज चाहिए होगा वो उसे अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट एलोकेट कर सकता है, अगर उसके पास अवेलेबल है तो। Other than that, it will deny the request. If now operating system is a manager in between. Now, if you require any of the thing, you can ask to the operating system. और जो मैंने सिस्टम कॉल्स की बात की थी वो यहीं पर यूज होता है। जब भी आप कोई रिक्वेस्ट करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो कैसे करते हो? बोल के नहीं बताओगे ना कि आई वांट दिस, राइट? यू विल जैसे ही हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि मैंने एक फाइल ओपन की, तो आई वांट टू रीड दैट फाइल और आई वांट टू राइट इन दैट फाइल, सो सिस्टम कॉल इज जनरेटेड। एक सिस्टम कॉल जनरेट होती है आपके सिस्टम में, जिससे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलता है कि आपको कुछ रिक्वायरमेंट है। इट्स वी आर हैविंग मल्टीपल सिस्टम कॉल्स, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक मैनेजर की तरह काम करता है। मतलब मैंने एक बंदा बिठा दिया है बीच में, जो क्या करेगा? मुझे जो भी चीजें चाहिए वो मुझे मैनेज करके ला कर देगा। इफ इट इज नॉट देयर इट विल डिनाई द रिक्वेस्ट। ऐसा नहीं है कि नहीं है तो भी ला कर दे, इट इज नॉट लाइक दैट कि अगर मेरे पास स्टोरेज ही नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी तो हमारे फोन्स में मोस्ट प्रॉब्ली वी आर हैविंग 1 TB ऑफ स्टोरेज ना, 1 TB, सॉरी इन लैपटॉप्स वी आर हैविंग 1 TB, फोन में भी हमारे पास 164 to 256 GB सेकेंडरी स्टोरेज होती है। तो पहले क्या था हमारे पास, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 3-4 years अगो, एंड्रॉयड फोन्स में हमारे पास 8 GB ऑफ secondary memory आती थी। We are having a storage of 8 GB, 16 GB, like that. At that time when you started, आपको कुछ स्टोर करना है, आपके पास स्टोरेज आपकी फुल हो गई है, तो आपका अब आपने क्या किया? यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर द रिसोर्स। फॉर विच रिसोर्स? स्टोरेज, दैट इज फॉर मेमोरी। आपको कोई फोटो खींचकर स्टोर, आपको कोई पिक्चर क्लिक करना है, आपको कोई वीडियो बनाना है, और आपको अपने फोन में ही सेव होगा वो बाय डिफॉल्ट। इट इज वी नो। एंड वी आर, अभी वो आपने क्या किया? कैमरा एक्सेस किया। कैमरा एक्सेस किया तो कैमरा एक्सेस करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जो सिस्टम कॉल गई, उसने आपको जो हार्डवेयर है, मतलब जो आपको कैमरा का एक्सेस है वो दे दिया है। whenever you will click on that it will give you the access of the camera, राइट? अब जैसे ही आपके पास कैमरा का एक्सेस आया, अब जब उसको पता है जब पिक्चर क्लिक होगी तो कहाँ स्टोर होगी? सिस्टम में। तो सिस्टम में स्टोर होगी तो उसके लिए स्टोरेज रिक्वायर्ड है। तो if you had seen that notification in the Android phones that your system storage is running out, have you seen that notification in the Android phones? 3-4 years ago, we are having that kind of phones in which we are having less storage. अभी तो स्टोरेज की प्रॉब्लम ही नहीं होती है, बट इन दैट टाइम आपको जो नोटिफिकेशन पैनल में वो मैसेज आता था, नोटिफिकेशन आती थी कि योर सिस्टम स्टोरेज इज रनिंग आउट इफ यू डू नॉट हैविंग। अब ऑपरेटिंग सिस्टम, अब आपके फोन को कैसे पता चल रहा है कि इसमें स्टोरेज नहीं है? बिकॉज देयर इज अ वन पर्सन who is responsible for managing all the hardware. Now he knows that your system is not having that much capacity that you can store this much of photographs or this much of videos in your system. So at that time when you access the hardware, right, it knows you will going to store something in your phone. When you click a picture, it will show that your storage is running out, right? So in this way you can say that your operating system is a person, is a system software. ऑपरेटिंग सिस्टम इज, अभी ये मत समझ लेना कि हमने सच में एक इंसान बिठा दिया है।
जो कंप्यूटर सिस्टम पे काम करके आपको दे रहा है. इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है. बट यू कैन इमेजिन वी हैड डिजाइन दिस सॉफ्टवेयर विद वेरी मच फीचर्स इट इज हैविंग एंड मैनेजिंग एवरीथिंग इन आवर सिस्टम. एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जैसे कि आप देखो, आप एक छोटा सा कोड लिखते हो. यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स, या फिर यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम ऑफ अ कैलकुलेटर. उसके लिए भी क्या मतलब, यू आर ऑलमोस्ट राइटिंग अ कोड ऑफ 50 to 80 लाइन्स, राइट, फॉर दैट. उसके लिए भी आपको पहले करना पड़ता है, सिंटेक्स ध्यान देना पड़ता है. फंक्शन कॉल कर रहे हो तो फंक्शंस कॉल हो रहे हैं नहीं हो रहे, वैल्यू रिटर्न हो रही है नहीं हो रही है, जो लॉजिक है एडिशन का इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट, सब्ट्रैक्शन का लॉजिक इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट, एंड ऑल दिस थिंग्स यू आर वेरीफाइंग करते हैं इतना सा प्रोग्राम जनरेट डेवलप करने में. यू कैन इमेजिन operating system is a very huge software because it is providing you a lot of things in the system. It is managing everything in the system, so you can see the designing complexity of this software, right? So operating system is a system software which acts as a manager, and it is having the responsibility to manage all the resources in the system. जितने भी सिस्टम के रिसोर्सेज हैं वो कौन मैनेज करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. अब हमें नहीं लेना देना है कि मेरे पास कितनी रैम बची है. देखो, मैं अपनी फाइल स्टोर करती जाती हूँ. अब उसमें से कितना स्पेस बचा है और कितना स्पेस फुल हो गया, उसका सब जैसे हम अकाउंटेंट रखते हैं ना अपने बिजनेस में, कि कितने पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, कितना बचा कितना रह गया, ये सब देखने के लिए हमने क्या रखे हैं, अकाउंटेंट्स रखे हैं. वैसे ही हार्डवेयर के रिसोर्सेज को देखने के लिए कि कौन सा रिसोर्स कब किसके पास है, कब फ्री है, कब कौन उसे यूज कर रहा है, कब किसने रिलीज कर दिया है, ये सब देखेगा कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम, right? The first point which I am clearing here is it acts as a manager for the resources of your system to provide the better services to the user. फाइन. नहीं तो अगर सोचो, अगर मैं अभी पॉइंट वही रह जाता है कि अगर मैं खुद से भी अगर एक्सेस करूँ ना हार्डवेयर को, तो मैं कर सकती हूँ. देयर इज नो प्रॉब्लम, यूजर कैन एक्सेस प्रिंटर डायरेक्टली, राइट. उसके बाद क्या प्रॉब्लम क्या आएगी? देयर वुड बी क्लैशेस. एक ही टाइम पर मल्टीपल, अब देखो, at the same time multiple we are talking about three processes. Let's talk, let's assume there are three processes. Everybody wants cpu at the same time. अब सीपीयू को कैसे पता कि उसे कौन से प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करना चाहिए? चलो सीपीयू टेक्निकल वर्ड्स को छोड़ते हैं, जर्नल लाइफ की बात करते हैं. एट द सेम टाइम यू पीपल आर आस्किंग समथिंग टू मी. सेम टाइम पे आप सबकी कुछ ना कुछ क्वेरीज हैं और सब आप सेम टाइम पे मुझे बोल रहे हो. कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, राइट. हर किसी को बात करनी है, राइट. यू आर हैविंग सम क्वेरीज. बट नाउ व्हाट इज द अप्रोच टू आंसर योर क्वेश्चन? देखो, अब मैं सबकी बात एक बार में तो नहीं सुन सकती, राइट, क्योंकि मेरे रिसोर्स क्या है, एक ही है. सिर्फ मुझे ही जवाब देना तो मैं सबको एक सबके क्वेश्चंस का एक साथ जवाब नहीं दे सकती, राइट. अगर एक ही सीपीयू तो एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है. अगर मल्टीपल है तो मतलब अगर 4 प्रिंटर्स हैं तो 4 लोग एक टाइम पे यूज कर पाएंगे, लेकिन अगर एक ही है तो एक ही बंदा यूज कर सकता है एक टाइम पे. ओके. So at the same time, everybody is asking questions to me, and on the same time, I cannot answer to everyone, right? So what would be the approach? क्या क्या approach हो सकती है? The first approach I can answer on the basis of first come first serve. कि जो पहले पूछ रहा है उसको पहले जवाब दे दूं, या फिर either I can answer on the approach that who is having a short term or who is having only to ask that yes or no kind of answer, उसे पहले जवाब दे दूं ताकि उस बंदे का काम खत्म हो और वो उसका टाइम वेस्ट नहीं हो. जिसको शायद ज्यादा बड़ी कॉन्वर्जेशन करनी है, which is having a detailed things, उससे बाद में बात करते हैं. This can be the approaches. Am I right or not? Possibilities हो सकती हैं दोनों, या फिर other there are many possibilities to handle the situations, right? So these are only two possibilities I am talking about. ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी करता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आपने एल्गोरिदम सेट किए हैं कि अगर एक टाइम पर मल्टीपल प्रोसेसेस सीपीयू को आकर अप्रोच करेंगे कि भाई मुझे यूज करना है, और वो बोलेगा मुझे यूज करना है, उस टाइम पे सीपीयू क्या करेगा, राइट. अगर सीपीयू नहीं है, मतलब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो क्लैश हो जाएगा और किसी का भी काम ठीक से नहीं हो पाएगा, ठीक है. जैसे कि ट्रैफिक में देखा है ना, बहुत बार होता है. अब दो लोग अड़ के खड़े हो गए हैं एक ही जगह पर,
और क्या बोलते हैं, वो बोलता है कि मैं नहीं हटूंगा और दूसरा बोलता है मैं भी नहीं हटूंगा, उससे क्या होगा, ट्रैफिक जैम, राइट, किसी का भी काम नहीं होगा। उसी को मैनेज करने के लिए वी आर हैविंग अ मैनेजर, जैसे कि ट्रैफिक जैम को मैनेज करने के लिए वी आर हैविंग अ ट्रैफिक पुलिस, वी आर हैविंग, राइट। तो वो मैनेज करती है चीजों को। वैसे ही वी आर हैविंग अ ऑपरेटिंग सिस्टम हु एक्ट्स एज अ मैनेजर बिटवीन देम। अब किसको पहले बहुत सारी प्रोसेसेस मान लेते हैं, 10 प्रोसेसेस एक टाइम पे आके बोल रहे हैं हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करना है, वांट टू प्रोसेस। अब उस टाइम पे सीपीयू क्या करेगा, किसको देगा प्रायोरिटी, उससे कोई मतलब उसकी कोई जानकार थोड़ी ना है कि मतलब इस प्रोसेस को मैं पहले देता हूँ एक्सेस, इसको बाद में दूंगा। इट इज नॉट लाइक दैट ना। या फिर यहाँ पर कोई ब्राइब भी नहीं चल रही है कि मैं तुझे कुछ ब्राइब दे रहा हूँ, तू मेरे लिए काम कर, राइट। सो व्हाट द सीपीयू विल डू अकॉर्डिंग टू द सिस्टम सॉफ्टवेयर, विच सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी अप्रोच ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको बताई होगी, जिस भी अप्रोच को वो ऑपरेटिंग सिस्टम फॉलो कर रहा होगा, उस अप्रोच के अकॉर्डिंगली सीपीयू वर्क करेगा। जैसे कि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं आपके, जो हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। We are having some approaches on the basis of that CPU will decide which process will be entertained first, like first come first serve, जो पहले प्रोसेस आएगा उसको पहले मिल जाएगा, ठीक है। फिर हैविंग शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जिसका काम सबसे छोटा है उसे सबसे पहले मैं एंटरटेन करूंगा, राइट। तो इन दिस काइंड वी आर हैविंग डिफरेंट अप्रोचेस। So this is a thing that operating system have to manage. अब ये सब काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। वो मैनेज करता है ये सब चीजों को, आपके रिसोर्सेज को सिस्टम में। फेयर इनफ। Okay. The second point here is it provides you a user-friendly environment in which a user may easily develop and execute program. Of course, you can say that as we had discussed कि अगर interface है, means as an operating system we are having an interface between a hardware and a user. So it provides you a user-friendly environment. You can access the things very easily. You can develop your programs very easily, right? And you can execute them very easily. अभी आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट का मतलब ये नहीं है कि सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आई विल डेफिनेटली कम एंड टॉक अबाउट द प्रोग्राम एंड प्रोसेस इन द टर्म्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम में हम प्रोसेस और प्रोग्राम्स इसको बोलते हैं। तो इट प्रोवाइड्स यू वेरी यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट सो दैट यू एवरीबडी कैन एक्सेस इन वेरी इजी एंड, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। Other thing that otherwise hardware knowledge would be mandatory for computer programming, as we already discussed. We can access the hardware without operating system, it is true, right? But for that hardware knowledge is mandatory. एक तो आपको hardware की knowledge होनी चाहिए, मतलब कौन सी system buses use हो रही है, memory कौन सी है, ठीक है। फिर कौन सी सीपीयू प्रोसेसर्स भी, अगर आप लोग सीओए पढ़ रहे होगे, माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह, उसमें आर्किटेक्चर्स आते हैं, आई थिंक 8086 और 8085, ऐसा कुछ आया अभी तक आपका सम इंस्ट्रक्शंस। हाँ, वी आर हैविंग प्रोसेसर्स। तो प्रोसेसर्स की भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, तो आपको सारे हार्डवेयर की नॉलेज होगी तभी आप उस पर प्रोग्रामिंग भी कर पाओगे, अदरवाइज यू वुड नॉट एबल टू, राइट। So it can be said that operating system hides the complexity. So mark these words, it hides the complexity of the hardware. What it mean by complexity of hardware means आपकी जो जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं ना सिस्टम में, आपको सबकी जानकारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि एक और एग्जांपल देते हैं आपको। यू आर यूजिंग योर मारवाड़ी लॉगिन पोर्टल, राइट। आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते हो एंड यू एंटर्ड इन योर पोर्टल वेरी इजीली। नाउ यू आर हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस देयर, यू कैन सी योर अटेंडेंस, you can see your e-content, you can see your result, you can see your timetable on one click. अब क्या आपको ई कंटेंट देखने के लिए पहले ये जानना पड़ता है कि कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, ये जो वेबसाइट बनाई है ये कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाई गई है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले मुझे सीखनी पड़ेगी तभी मैं ये पोर्टल चला सकती हूँ। इट इज नॉट मैंडेटरी। So what it says here, it hides the complexity, which is also known as abstraction if you know about the object-oriented programming. What is abstraction? It hides the complexity which is not required for the users.
यूजर्स को जो चीजें नहीं चाहिए, इट इज रिटन हियर, इट हाइड्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हार्डवेयर विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द यूजर। यूजर को जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, देखो जैसे मैंने पहला ही एग्जांपल दिया था, अगर मुझे फैन चलाना है तो मेरे को क्या है, मुझे मैंने स्विच ऑन किया, मेरा फैन चल गया। आफ्टर दैट व्हाट इज गोइंग इन दैट, व्हाट इज द थिंग्स, जैसे करंट कैसे पास हो रहा है, कौन सी वायर्स को कनेक्ट किया है, एसी या डीसी यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, मुझे इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है। आई डोंट वांट टू एंड आई एम नॉट बॉदर्ड, राइट? So from the uninterested user, it hides that complexity and provides the simplicity and easiness to use these systems. So basically, what is operating system? Why we are using operating system? What is the roles and functionality? What is the actually basic responsibility? And you can say that role of operating system. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Yes. अभी किसी को कोई डाउट है then you can ask. पर ये चीज सबको क्लियर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं और क्यों पढ़ेंगे अब? ओके, चलो फिर। As you can see here, where does the operating system fit? See, there is a one problem with our computer engineers, na? One problem, or we can say that one limitations we people are having with us is having, we cannot see the software as in physically. हम सॉफ्टवेयर को ऐसे फिजिकली नहीं देख सकते हैं, ठीक है? जबकि हम दूसरे फील्ड की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, फ्रॉम द ब्लूप्रिंट टू द development of to the construction of building, you can see the progress and you can see the construction as well, physically available things. But in when we talk about the software or the computers, it is not physically available. ठीक है, आप प्रोसेसर देख सकते हो, आप रैम देख सकते हो, लेकिन रैम के अंदर वैसे सोचा नहीं कि यार ये कैसे, मतलब मेमोरी इतनी है, इतनी सी चिप पे इतना डेटा कैसे स्टोर कर पा रहा है? So there is a problem, or we can say there is a we can also identify this thing as an advantage or a privilege to us, that we are having that much imagination capacity that we can imagine the things in our mind. जब आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाती है ना कि हाँ ये चीज ऐसे कनेक्टेड है और ये चीज ऐसे कम्युनिकेट कर सकती है, then the things are more clear. You know ना, when pictures are clear in your mind, so here you can see that where the operating system fits. अब हम देख तो नहीं सकते हैं, अभी कंप्यूटर में घुस के नहीं देख सकते ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ फिट किया हुआ है, वी कैन नॉट सी दैट, वी आर हैविंग एन आइडिया, वी नो दैट हाउ इट वर्क्स, राइट? सो हम इसको एज एन एडवांटेज या प्रिविलेज भी कह लें या एज एन लिमिटेशन भी कह लें, बिकॉज एज एन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स we have to imagine the softwares in our mind, only in our imaginations only. After the completion of that software we can able to see the software. ऐसा नहीं होता ना, जैसे कि आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है तो ब्लूप्रिंट आया, तो ब्लूप्रिंट के बाद कितना कंस्ट्रक्ट होगा, 40% कंस्ट्रक्ट हुआ आप देख सकते हो, 60% कंस्ट्रक्ट हुआ आप देख सकते हो, लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या है, जब पूरा बनेगा तभी दिखेगा how it is working, which pages you are having for navigation, right? Otherwise you can only having the imagination of these things कि हाँ मेरा जो वेबसाइट है उसका फ्रंट एंड ऐसा होगा, उसका बैक एंड पे ये होगा, उसके पेजेस यही होंगे, दिस इज व्हाट यू आर हैविंग, राइट? So basically you can see here where does the operating system fit. We discussed that it is an interface between hardware and user. So you can see here in this picture, in this diagram, we are having a user program and a users on the front end, means on the top level, right? हार्डवेयर इज ऑन द बॉटम लेवल, हार्डवेयर आपका सबसे लास्ट लेवल पे होता है, ठीक है? और ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच में होता है। वी ऑलरेडी गिवन दिस स्टेटमेंट ना कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक इंटरफेस है, इंटरमीडिएट है यूजर के बीच में और हार्डवेयर के बीच में। सो दिस इज योर हार्डवेयर and this is your software. Operating system is, again I'm saying that it is not a user or a person or any database, it is a system software.
It is again a software you are having, right? So you are having a system software, and then over that you are having user programs or application softwares. You can see here web browser hai, email readers hai, you are having a music players. Now everything at the user end is a user program. Any user wants to operate anything, it will send a request to the operating system will give access of these hardwares to you and will send the response to you and give the access to these devices to you. So in between, operating system is there. You can see operating system lies between hardware and user, and it acts as an intermediate between them. Fine. Now there's another point, that is modes of operations. Now, what are the mode of operations in computer we are having? See, we know that operating system is an intermediate between user and hardware. अभी देखो, मुझे कोई भी फाइल एक्सेस करनी है तो मैं उस फाइल पे क्लिक करूंगी तो एक सिस्टम कॉल जनरेट होगी जो किसके पास जाएगी? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? यस, दिस यूजर वांट्स दिस फाइल. उसके पास एक्सेस है, वो क्या करेगा? उस फाइल का एक्सेस किसको प्रोवाइड करेगा? यूजर को, और यूजर उस फाइल को यूज कर पाएगा. तो बेसिकली वी आर हैविंग टू मोड्स. जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो दो मोड होते हैं मेरे कंप्यूटर में. एक तो होता है यूजर मोड और दूसरा होता है कर्नल मोड. We are having two modes of operation, user mode and kernel mode. Now what is user mode and what is kernel mode? Kernel mode is a mode in which the system, we are having a complete access of your hardware like your operating system. You can see here in this diagram, kernel mode represents the operating system space and user mode represents your users, right? जब आप कर्नल मोड पे काम कर रहे हो इसका मतलब आपके पास हर एक हार्डवेयर को एक्सेस करने के प्रिविलेज हैं. दिस इज एन हाई प्रिविलेज्ड मोड, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है, राइट? बट इन यूजर मोड यू डू नॉट हैविंग दैट प्रिविलेजेस टू एक्सेस एवरी हार्डवेयर इन योर सिस्टम. हर एक इंस्ट्रक्शन को आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो, राइट? अब जैसे कि कर्नल मोड की बात करें तो दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम वी आर हैविंग, दैट इज हैविंग द कंप्लीट एक्सेस ऑफ द हार्डवेयर एंड इट कैन आल्सो execute the every each and every instruction that machine is capable of, right? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोगों को मैं साथ साथ कंपेयर करती रहूंगी रियल लाइफ चीजों से ताकि आप लोग कनेक्ट कर रहे हो कि आप रेगुलरली वो चीजें देखते हो. आप लोगों ने अपने लैपटॉप्स में या कंप्यूटर सिस्टम्स में जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर हैविंग इन सी ड्राइव, राइट? वी आर हैविंग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड इन सी ड्राइव्स. जब आप कोई सी ड्राइव में जाकर किसी फाइल में चेंज करने की ट्राई करते हो या फिर कुछ अपडेट करने की ट्राई करते हो या उस फाइल को ओपन करने की भी ट्राई करते हो, तो क्या वो आपको एक पॉपअप मैसेज करता है कि यू रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स? हैव यू सीन दैट पॉपअप मैसेजेस whenever you tried in C drive? Basically I'm using C drive because here the operating system is installed. तो कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं, देखो सी ड्राइव में बहुत सारी फाइल्स होती हैं जो मैंने तो कभी डाउनलोड नहीं की और नहीं इंस्टॉल की, ठीक है? तो वो फाइल्स कहाँ से आई? डेफिनेटली जब आपका ओएस इंस्टॉल होता है तो सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सिस्टम कंपेटिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो फाइल्स रिक्वायर होती हैं वो उसके साथ साथ इंस्टॉल होती है, ठीक है? अब मैं वहां पर जाकर कुछ फाइल्स को चेंज करना चाहती हूँ या उसमें जाकर कोई भी फाइल को चेंज करना चाहती हूँ, तो आई एम वर्किंग इन a यूजर मोड, right? I am not having the complete access of everything. I am not an authorized person. तो अगर मैं यूजर मोड में काम कर रही हूँ तो मेरे पास हर एक चीज को एक्सेस करने का राइट नहीं है. इसीलिए जब आप कोई नई चीज इंस्टॉल करते हो तो वो क्या पूछता है आपसे? नोटिफिकेशन आती है ना आपको, डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर? When you say yes, it start installing. And also when you go to the C drive where the operating system files are installed, if you want to access them, अभी देखो आप एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में कैसे जाते हो? डू यू नो हाउ? इन कमांड प्रॉम्प्ट. व्हेन यू ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट ना, देयर आर टू ऑप्शंस. एक तो यूजर मोड में ओपन होता है जब आप डायरेक्टली ओपन करते हो, और जब आप उसमें राइट क्लिक करके उसे ओपन करोगे ना, राइट क्लिक करके देयर इज वन ऑप्शन यू विल गो टुडे एंड सी देयर यू कैन ओपन इन इट एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव. जब उसे एज एन एडमिन आप ओपन करोगे ना तो आपके पास एक्सेस होता है कंप्यूटर की चीजों में चेंज करने के लिए. Yes, you have seen, correct. So आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स के साथ जब उसे ओपन करते हो तो आप कर्नल मोड में एंटर करते हो जिसके पास एक्सेस है कुछ भी चेंज करने का,
ठीक है, लेकिन यूजर मोड में आप सब कुछ चेंज नहीं कर सकते. दिस इज द डिफरेंस. So we are having two modes of operation in our system, kernel mode and user mode. Kernel mode is having all the rights, all the privileges, complete access of the hardware. And second thing, user mode, which is having less privileged as compared to kernel mode, and it only executes some machine instructions as per the user requirement, right? लेकिन आप अभी देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्नल मोड में एंटर नहीं कर सकते हो. आप एक्सेस लेना चाहो तो मैं बोला ना, कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हो तो आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एज एन एडमिन ओपन करोगे तो वो रन होता है. फिर आप उस पर कोई भी कमांड रन करोगे ना तो आपके सिस्टम में चेंज हो जाएगा, राइट? सो वी आर हैविंग, यस, anyone who wants to ask anything? No, ma'am. Okay. So these are the two modes of operation. This is kernel mode, which type of hardware we can access. But in kernel mode, you are having access to everything in the computer system. Hardware like RAM, processor, your memory, जितनी भी memory है आपके पास, registers हैं आपके पास, everything as in hardware you can access them. As a user, you are requesting to the operating system, na? And operating system is in which mode it is working in kernel mode, जिसके पास सबका access है. तो as a user आप directly access तो नहीं कर सकते, ठीक है? तो हमने बेसिकली अपने कंप्यूटर को दो मोड्स में डिवाइड कर दिया है, ताकि अब यूजर को अगर मैं सारे एक्सेस दूंगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा ही क्यों? नहीं जाएगा डेफिनेटली, वो खुद से एक्सेस करेगा. लेकिन अगर उसके पास राइट्स नहीं है, जैसे अगर मान लो आपके पास कुछ राइट्स नहीं है, तो आप क्या करते हो? फैकल्टी को अप्रोच करते हो, एचओडी को अप्रोच करते हो कि मैम प्लीज कैन यू प्लीज अलाउ अस टू डू दीज थिंग्स. तो अगर आपको सारे राइट्स दे दिए जाएंगे तो आप किसी को अप्रोच करोगे? किसी से हेल्प मांगोगे? नहीं. तो वैसे ही अगर यूजर के पास सारे एक्सेस राइट्स नहीं होंगे तभी वो ऑपरेटिंग सिस्टम को अप्रोच करेगा. ऐसे ही हमने दो मोड्स में अपने सिस्टम को डिवाइड कर दिया है. यूजर सिर्फ यूजर मोड में काम कर सकता है. अगर उसे किसी भी चीज का एक्सेस चाहिए तो वो किसके पास जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, जिसके पास सब चीजों का एक्सेस है. आर यू वेटिंग? ओके. सो this is the detailed overview about the operating system and the modes of your computer in which we are working. We will go ahead with this discussion in the next session. We are closing the session here with this discussion here. Make sure that you people will read it once so that you will be clear. अभी मुझे ये बताओ पहले आप लोग कि अभी क्यूरियोसिटी हो रही है ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ने में? अच्छा लग रहा है? यू आर फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग कि कैसे कैसे करता है ये काम? हाउ इट इज वर्किंग, हाउ इट इज मैनेजिंग ऑल द थिंग्स? ग्रेट, ग्रेट, very good. So I already said to you, if you relate these things with your real life now, because you people are having all these things in your everyday life, अगर आप उसे रिलेट करके और लॉजिकली समझोगे तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, right? So we are closing this session here with that, and we will continue with this discussion in the next session. I hope you people are enjoying this subject. Yeah, yeah.